Jai aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSBCrack exams channel, and here we are in the series of our solving the MCQs for the geography. And in today's lecture, we'll be solving the MCQs part 1 for the Indian geography. So let's start with the session. So the first question is, which among the following highways connect Sikkim with the rest of India? It's NH10, National Highway 32A, NH28, NH26A. So we all know that yes, we get the questions on the road networks, industries, and all telecommunication lines. So yes, this is the part of the that topic only. So tell me the answer. What will be the answer? Sikkim with the rest of India. Okay, so the answer for this is NH10. So we'll be seeing in the picture also. So see, from here we are having the whole of our India. Correct. Next question. Teen Biga corridor is located on the border of the two countries, India and Pakistan, India and Nepal, India and Bangladesh, and India and Myanmar. So now here we name that this that is a Teen Biga corridor. Similarly, we are having many type of such corridors which are named differently. Like we know about the chicken neck corridor. So yes, these are all the things which you have to tackle on because on the name basis this can be asked. Teen Biga corridor. Okay, so the answer is C, that is India and Bangladesh. So yes, this is the answer for the where do we have the India Teen Biga corridor. So this is between the India and Bangladesh. Okay, next question. Which of the following is incorrectly matched? So Barra Fuel project, that is in Himachal Pradesh. Solar project is in Jammu and Kashmir. Tanakpur project is in Uttar Pradesh. Quail Karo project is in Bihar. So you have to find out that among them which is the incorrect one. Okay, so the answer is this, that is in Bihar. Then, so the Quail Karo project 710 megawatt hydroelectric project, this is in Ranchi, that is in Jharkhand. Other projects, Baira Fuel project, Himachal Pradesh, Solar project, Jammu Kashmir में ही है. Tanak project is in Uttar Pradesh only, but जो Quail Karo project है, that is in where? That is in Jharkhand. ये हमारा बिहार में नहीं है. So yes, projects are all important, correct? चलिए अगला क्वेश्चन. इंडिया इज द फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मराइन बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड इन भावनगर, जामनगर, मुंबई या पौंडीचेरी. भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मराइन बायोडाइवर्सिटी. What will be the answer? So the answer is Jamnagar. So the first National Center for Marine Biodiversity is located in Jamnagar, correct? Wheeler Island, which is used by India for its missile test, is located in which state? Wheeler Island. Tamil Nadu, Odisha, Andhra Pradesh, Kerala. Wheeler Island, which is used by India for its missile test, is located in which state? Tamil Nadu, Odisha, Andhra Pradesh, Kerala. एंड इसी पर्टिकुलर आइलैंड को हम अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से भी जानते हैं. सो वेयर इट इज इन? यस, इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा. सो अब्दुल कलाम आइलैंड, व्हीलर आइलैंड के नाम से इसको जाना जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया टचेस मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज? जो नीचे स्टेट्स दिए हैं उनमें से सबसे ज्यादा बाउंड्रीज कौन सा स्टेट टच करता है? सो इट्स कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश. Which of the following state of India touches maximum state boundaries? It's a Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh. Okay, so the answer for this question is Uttar Pradesh, correct? So अगर आप उत्तर प्रदेश को मैप में देखेंगे, so yes, you'll be getting the maximum borders के साथ यही टच करता है. Which of the following region of India is best suited to cotton cultivation?
डेक्कन प्लाट्यू, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडो गंगेटिक प्लेन या ईस्ट कोस्टल प्लेन। कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट एरिया इनमें से कौन सा है? डेक्कन प्लाट्यू, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडो गंगेटिक प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। Done. So the answer is what? That is Deccan Plateau. Correct. So cotton cultivation के लिए सबसे बेस्ट जो हमें देखने को मिलता है that is the Deccan Plateau only. Bhutan does not share its border with which Indian state? West Bengal, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim. Bhutan does not share its border with which Indian state? What will be the answer? Okay, so the answer is Meghalaya. Done. So अगर आप भूटान को देखेंगे, this is Bhutan. वेस्ट बंगाल के साथ भी शेयर कर रहा है, देखिए ये वाला एरिया। देन अरुणाचल प्रदेश के साथ यहाँ से। डन। सिक्किम के साथ में लेफ्ट साइड से। बट इफ यू टॉक अबाउट द मेघालय, तो मेघालय के साथ ये रहा मेघालय, ऊपर असम आ जाता है। सो ये कोई भी बॉर्डर ये शेयर नहीं करता है। जोजिला इज द पास बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? एक जोजिला पास रहता है, तो वो कौन से रीजन्स के बीच में? कश्मीर वैली एंड लद्दाख, लाहौल वैली एंड स्पीति, चुंबे वैली एंड सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत। Zojila is the pass between which of the following regions? Kashmir Valley and Ladakh, Laos Valley and Spiti, Chumbi Valley and Sikkim, Arunachal Pradesh and Tibet. क्या होगा आंसर? Yes, so Zojila Pass is between Kashmir Valley and Ladakh. So this is the Zojila Pass. This is the line, and here will be having the Zojila Pass. Which of the following glaciers is located in the Lahaul Spiti region? दामर, रुपल, सोनापानी या जीमू, इनमें से कौन सा ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति में पाया जाता है? Which glacier amongst these we are having in the Lahaul Spiti region? Okay, so the answer is Sonapani. Correct? Sonapani is the right answer. Which of the following matches of states and their highest peaks are correct? West Bengal and Sandakafu, Tamil Nadu and Dodabeta, Kerala and Anamuri, Maharashtra and Kalsubai. Which of the following matches of states and their highest peaks are correct? West Bengal and Sandakafu, Tamil Nadu and Dodabeta, Kerala and Anamuri, Maharashtra and Kalsubai. आपको बताना है कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। ओके, सो द आंसर इज डी, सारे के सारे सही है। संदाकाफू इज इन वेस्ट बंगाल, डोडाबेटा इज इन तमिलनाडु, अनामुडी इज इन केरला एंड कालसुबाई इज इन महाराष्ट्र। करेक्ट। चलिए, which among the following beaches are located in the state of Odisha? सत्यबा बीच, गंजम बीच, कोणार्क बीच, घेरमाथा बीच। इनमें से जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन से बीचेस जो हैं जो उड़ीसा में पाए जाते हैं? ओके, सो द आंसर इज वंस अगेन चारों के चारों बीच सत्यबा, गंजम, कोणार्क, घेरमाथा, चारों बीचेस हमें उड़ीसा में ही पाए जाते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब? जब हम रिवर्स देखते हैं पंजाब की, सो सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन से है? झेलम, चिनाब, सतलज या ब्यास? विच इज द वेस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ द पंजाब? झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास। ओके, सो द आंसर इज झेलम। डन। सो दिस इज द झेलम, ये रही हमारी झेलम फर्स्ट वन। देन वी आर हैविंग द चिनाब। बाकी सेट तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट में जो पाई जाती है दैट इज झेलम ओनली। करेक्ट। इंडिया इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स?
आपको अगर अपने इंडिया के लेटीट्यूड्स देखे होंगे, लॉन्गिट्यूड्स का हमको डाइवर्जन पढ़ना होता है, तो आपको बताना है लेटीट्यूड इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट 7 डिग्री 4 39 डिग्री 6 8 डिग्री 7 36 डिग्री 6 7 डिग्री 4 या 40 डिग्री 6। क्या होगा आंसर? Yes, the answer is A. So latitude, longitude सब आपके लिए बहुत जरूरी हैं. You have to see this because बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है. Which among the following states is the largest producer of coffee in the India? Which among the following states is largest producer of coffee in the India? Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala. So whenever we talk about the coffee, so the largest producer is what? That is Karnataka. Correct? Chaliye. And which of the following states of India is located the Cheria iron ore mine complex? In which of the following states of India is located the Cheria iron ore mine complex? Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh. Okay. So the answer is what? That is Jharkhand. तो कहाँ पे located है ये? This is in Jharkhand. Correct? Mathabhanga River is treated as an international border between which among the following countries? एक रिवर का नाम दिया गया, that is the माथाभंगा. So आपको बताना है ये कि कौन सी दो कंट्रीज के बीच में इसको एज अ बॉर्डर ट्रीट किया जाता है. इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड श्रीलंका. नेम इज माथाभंगा. Okay, so the answer is what? That is India and Bangladesh. Correct? Chale, next question. Which among the following state of India is the best known for saffron cultivation? Sikkim, Assam, Jammu and Kashmir या Meghalaya? Best known for saffron cultivation. So the answer is for sure that is the Jammu and Kashmir. We also call that as a saffron and area Karevas. Correct? So ये सारे कुछ words terminologies जो कि important है for the saffron cultivation in the area that is in the Jammu and Kashmir. Correct? चलिए. The East-West Corridor of National Highways Development Project connects what? Guwahati to Ahmedabad, Silchar to Porbandar, Guwahati to Jungarh या Guwahati to Delhi? East-West Corridor. चलिए आंसर इज सिलचर टू पोरबंदर. करेक्ट. सो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौन से दो पॉइंट्स को, एक्सट्रीम पॉइंट्स को कनेक्ट करता है? दैट इज द सिलचर टू पोरबंदर. Which among the following areas in India have the potential for the generation of a geothermal energy? So it's a Pagga Valley, Manikaran area, Western Ghat, Damodar Valley. तो इनमें से कौन से वो रीजन्स है जो कि जियोथर्मल एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है? मणिकरण, पग्गा वैली, वेस्टर्न घाट, दामोदर वैली. Okay. So the answer is what? That is all four. So these all four are associated with the geothermal energy. For example, if we talk about the Manikaran area, we are having a very like it's a boiling water there, correct? Then, so that is due to the geothermal energy only. National Highway Authority of India was established in which year? We are talking about the NHAI. 1955, 88, 92, 98. Indian National Highway Authority. Yes, the answer is what? That is 1988. So NHAI is established in which year? That is in 1988. Next question.
Now here we are having some statements. Which among the following about the river Chenab are correct? So you have to tell the correct statements. The length of the Chenab river is 1180 kilometers in India. It is known as Chandrabhaga in Himachal Pradesh. It flows between Pir Panjal and Greater Himalayas. Salal project is located on this particular river. So which of them are the correct statements? You are having the 4 statements. You have to tell me correct statement for the Chenab river. Done. So the answer is what? That is all 4 are correct. So length is what? 1180 kilometers in India now, and you have to tell one thing कि इंडिया में पूछा गया है कि ऑल ओवर जो चिनाब की लेंथ है बिकॉज पाकिस्तान से भी निकलती है, करेक्ट. सो 1180 किलोमीटर है इंडिया के अंदर. चंद्रभागा इसको हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है. उसका रीजन क्या है? 2 रिवर्स मिलके चंद्र रिवर प्लस भागा रिवर मिलकर ये एक रिवर बनाते हैं जिसको बोलते हैं चंद्रभागा. ठीक है जी. पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयस के बीच से निकलते और सलाल प्रोजेक्ट है वो भी किसके ऊपर है? चिनाब रिवर के ऊपर ही है, करेक्ट. नेक्स्ट. अजय रिवर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़. Ajay river passes through which of the following states of India? Bihar, Jharkhand, West Bengal, Chhattisgarh. Done. So Ajay river passes through what? That is 1, 2, 3. Not from Chhattisgarh, but for sure from the Bihar, Jharkhand and the वेस्ट बंगाल. एंड वैसे भी जो भी रिवर्स एटलीस्ट मैंने आपको बोला है कि आपको एक चीज बहुत नोटिस रखना है, दैट इज कि कोई भी रिवर कौन कौन से स्टेट से जाती है, मींस उसका ड्रेनेज बेसिन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट व्हाट इज द ड्रेनेज बेसिन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर. Jhanur Gandhar thermal power station is located in which of the following states of India? Jhanur Gandhar thermal power station. Gujarat, Assam, Maharashtra, Madhya Pradesh. Gujarat, Assam, Maharashtra, Madhya Pradesh. Done. So Jhanur Gandhar thermal power station is where? That is in the Gujarat. Correct. So last question for this particular session is Nuclear Power Corporation of India was established in which of the following year? 1955, 1987, 1992, 2001. Nuclear Power Corporation of India was established in which of the following year? 1955, 1987, 1992, 2001. Okay, so the answer is what? That is 1987. So chaliye aap that was with the Indian Geography ka part 1. I'll come with the more MCQs for Indian Geography. तब तक just see these are the courses available. NDA CDSF के आप किसी भी कोर्स में अवेल कर सकते हैं जब भी आप उनमें सब्सक्राइब करें. तो there's a discount code. Warrior 10 जरूर यूज कीजिए. You'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for this particular lecture. Thank you so much for watching. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.